Hello students, welcome to my channel, that is Absolute Shikhar. This is a series of videos and small concepts of philosophy and psychology, and this is my introduction. I have pursuing my PhD from education philosophy and I am qualified UGC NET in education. From my qualification I have done MEd and MCA and I have around 15 years of experience in education sector. So from this series, the first topic I am taking is critical pedagogy. I presume that you all know Paulo Freire and his work, what he has done for children. So from his work, which is published from 1968 to 70, in that book, he proposes a pedagogy with new relationship between student, teacher and society. और इस जो भी उन्होंने काम किया था, दैट बुक इज क्रिटिक फॉर सर्टेन एजुकेशनल मेथड नोन एज बैंकिंग मेथड. ये सब भी आप जानते होंगे. इफ एनी डाउट प्लीज़ आप इसे मैसेज में बताएं. आई विल श्योरली शेयर पूरा डिटेल्ड कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग मेथड एंड पॉलो फ्रायर. सो उसमें से फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ क्रिटिकल पेडागॉजी वॉज देयर. एंड व्हाट इज क्रिटिकल पेडागॉजी? Critical pedagogy is a teaching approach, ठीक है, which attempts to help students question and challenge domination and beliefs and practices that dominate them. It tries to help students become more critically conscious. Students अपने खुद questions develop करें, students अपनी खुद knowledge develop करें on the basis of answers they get and on their consciousness. वो अपनी खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें. कंस्ट्रक्टिविज्म भी आएगा इसमें. ओके. क्रिटिकल पेडागॉजी इज अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन डिस्क्राइब्ड बाय हेनरी ग्रॉक्स और अदर स्कॉलर्स. इन्होंने भी काम करा है इसमें. मेनी स्कॉलर्स हैव डन आफ्टर पॉलो फ्रायर. is an educational movement guided by passion and principle to help students develop consciousness of freedom, recognize authoritarian tendencies and connect knowledge to power and ability to take constructive action. So they should construct their own knowledge from any text, from any social scenario, from political things, whatever happening around them. They should be aware of all the things, whatever happening around them. So उस basis पे they should construct their own knowledge. Critical pedagogy is a form of education in which students are encouraged to question dominant and common notions of meaning and form their understanding what they learn. जितनी भी common notions हैं, जो भी कुछ उनके आसपास हो रहा है, उस पर they should construct their own knowledge. They should be free to ask questions, and on the basis of that, they should construct their own knowledge. Critical thinking, okay, that is critical pedagogy. क्रिटिकल पेडागॉजी जैसे आपने वही बात जो हमने बोली है कि पॉलो फ्रायर हैज़ गिवन द फर्स्ट टेक्स्ट, बट बाकी मैनी पीपल हैव वर्कड ऑन दिस टेक्स्ट, ऑन दिस टर्म फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स. सो उनके नाम हैं ये. एंड शॉर हैज़ गिवन सम इम्पॉर्टेंट things and important terms that mostly students must understand the deep meaning of root causes, social context में, and personal consequences. किस पे? Any action जो भी हो रहा है हमारे आसपास, event, anything from news we are seeing all the things what are happening around, object, process, organization in which they are studying or around them, experiences what they are getting from any of the social construct, टेक्स्ट व्हाट दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैटर जो पढ़ रहे हैं वो, पॉलिसीज़ हमारे अराउंड कितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर, मास मीडिया एंड एनी डिस्कोर्स वट एवर द हैपनिंग अराउंड, उस पर जो भी दे शुड कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज एंड दे आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. ओके. सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड राइट नाउ. थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड.